Hi everyone, welcome to today's episodes of Indian Parents and Narcissism, Love or Control, where we explore the unseen, unspoken truths about relationships and family dynamics in India. So, today we are diving into a topic that will make many people squirm and maybe many others nod along furiously: Indian parents and narcissism. Yep, you heard it right. And again, before switching, एक बार सुन लो भाई और बहनें. If you don't agree, then of course, comment and leave. Okay, so let's get one thing clear. Not all Indian parents are narcissist, but many are. And many times, जब ये parents narcissist होते हैं, their love and sacrifice comes wrapped in control and guilt. And let's face it, in a culture where family is everything, हमारा culture जहाँ पे family is considered to be everything and above everything else, questioning parents can feel like committing a crime. No matter how old you are an adult, but you still are not allowed to question or talk to your parents like adults. अनफॉर्चुनेटली यही हमारे कल्चर का ट्रुथ है, यही हमारा सोसाइटी का फंक्शन है. यू नो द ड्रिल. शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग में टॉप किया, तुम क्या कर रहे हो? Now, imagine if a partner does that to you, compares you to another person. We'll talk about red flags. But parents do that, and that's supposed to be okay? No, nah, that's also a red flag. And it's not about you. You know, for them, it's about how you make them look to the world. Their self worth is tied to your achievements. And God forbid you fall short. So, अगर आप अच्छा कर रहे हो, then उनका नाम रोशन होगा दुनिया में, which is what they want. And if you dare to say no, then be ready for the guilt tsunami. हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तूने? Suddenly, it's not just that you're disobeying, it's that you're disrespecting decades of sacrifice. So, you're supposed to achieve and fulfill unke dreams, unke desires, and if you dare question or tell apne khud ke desires, then achanak se you're not a good son or daughter. And let me ask you one thing. Agar if their love depends on you obeying them, then is it really unconditional? मतलब isn't this then a barter system? जैसे हम पैसे दे के बाजार में कुछ खरीदते हैं, ये तो वही हो गया ना कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुमको प्यार करूंगी या करूंगा. इससे ज़्यादा प्यार तो फिर हम अपने पार्टनरशिप्स और मैरिज एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स में पा सकते हैं. बिकॉज इन अ वे देयर यू माइट चूज अ पर्सन जो कि ये बार्टरिंग ना करे. And if you don't obey or listen to your parents, um, yeah, like I said, not just your parents, your relatives, the entire society is there to shame you into कैसे बच्चे हो यार. And at the same time, you are not allowed to question them. And they don't have to listen to you and they don't have to obey you. Here's a hard pill to swallow. Many parents in India see their children as extensions of themselves, not as individuals. दे विल प्राउडली से कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया या मेरी बेटी इंजीनियर है या मेरी बेटी अपनी शादी के बाद घर संभालेगी. एंड नोटिस समथिंग कि चाइल्ड के विशेस, जो कि एक अडल्ट होगा इस पॉइंट पे, उसके ड्रीम्स, उसके स्ट्रगल्स आर ऑफन नोवेयर इन दिस सेंटेंस. इट्स अबाउट क्या पेरेंट्स ने, क्या वो एक्सटेंडेड फैमिली ने, क्या आपके समाज ने आपके लिए क्या सोच रखा है, वो करना होता है. ना इमेजिन दिस. आपके पेरेंट्स आपका करियर डिक्टेट कर रहे हैं, आपका मैरिज डिक्टेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका पेरेंटिंग स्टाइल भी डिक्टेट कर रहे हैं कि यार हम तो ऐसे नहीं बच्चे को पालते थे, हमने तो ऐसे पाला था. एंड अगर आपने इफ यू डेयर टू सेट बाउंड्रीज, ऑल ऑफ सडन आप बदतमीज, सेल्फिश और बदल गए हो. बट boundaries are not disrespect, they're survival. They're about protecting your individuality in a culture that sometimes demands you lose it. Ever heard कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था? That's nostalgia weaponized to control you. But the truth is, times change, challenges change.
What worked in their ज़माना may not work now. ये दूसरा ज़माना है आंटी अंकल, आप उस ज़माने की तरह तो नहीं जी रहे ना अब। आपके ज़माने में पर्दा होता होगा और क्या-क्या नहीं होता था। मोबाइल नहीं होता था, पर अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ज़माने के साथ चल रहे हैं ना। पर अपने बच्चों के लिए वो ज़माने को क्यों नहीं आप बदलने दे रहे? Many parents struggle to let go of the idea that they always know best. Now, before you think I'm just here to bash parents, let's be fair. In many cases, this isn't entirely their fault. In some cases, it is, but in many cases, it's not. India ka culture glorifies sacrifice to the point where some parents lose themselves in their roles. They're products of a system that taught them control is the same as love. So, how do we break the cycle? It starts with conversations. Instead of falling into guilt traps, explain your boundaries with love and respect to your parents. And for parents who are listening, understand that your kids are not your trophies, they're individuals. Let them make mistakes, let them live their life. Do not try to live your life through them. And I'm not saying this would necessarily work. You can always try to have conversations. In many cases, it may not work. In which case, you still have to take a call. Do you want to live your life according to what your parent says, or do you want to live your life according to what you want? Because life एक ही बार आती है. You don't even know, अगले 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है. You don't know अगले 5 साल में क्या होने वाला है. So live your life. And if they truly love you, they will let you be. They will not force you to be who they want you to be. Um, Parenting is not about creating clones. It's about raising independent, happy humans. You know, आप आस-पास देखना, सारे जानवर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे को पैदा कर अब अपने बाहर घर के देखना, गाय, भैंस, सूअर, हाथी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली सब बच्चे करते हैं। बच्चे को खाना-पीना खिलाते हैं, उसका ध्यान देते हैं जब तक वो छोटा होता है। पर उसके बाद क्या वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बड़े होके तुम हमारा ध्यान दो? नहीं, सिर्फ़ एक इंसान ही है, जहाँ पे जब माँ-बाप बच्चों के लिए करते हैं ना, तो उसके बाद उसको एक ऐसा डेब्ट बना दिया जाता है कि हमने तुम पे इतना बड़ा कर्ज़ दिया है कि अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है उसको वापस करना। सिर्फ़ इंसान करता है। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, कुत्ता सबको देख लेना। सब अपने बच्चे का ध्यान देते हैं, पर कोई अपने बच्चे को बाद में इमोशनली ब्लैकमेल और मैनिपुलेट नहीं करता कि हमने वो किया अब तुम्हारी बारी है। तो ये सोचना भाई कि हम इंसान होके भी जानवर से भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सारे जस्ट नोटिस दिस कि सारे जानवर अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, पर सिर्फ़ इंसान ही होगा जहाँ पे बच्चों को एक बार बड़े होने के बाद भी दे आर फोर्स्ड कि यू हैव टू फॉलो अपने पेरेंट्स का गाइडलाइंस एंड बी व्हाट दे वांट यू टू बी। So let's just rewrite this narrative one conversation at a time. And if my words strike a chord with you or you disagree, just let me know and share it with somebody who needs to hear it. And yeah, let's just discuss other hard topics that maybe um, it's time we question everything.